What's up, guys? Hope you're doing good and keeping yourself safe. Today is my fifth day of journey. Day before yesterday, when I was sightseeing for temples, I learned that there is a weekend lockdown in Coorg. I did not think of this situation. However, I still decided not to cancel this destination and to still ride to Coorg because the main purpose of this whole ride was to hit Coorg and come back to square one. I started my ride yesterday at 12 pm and thought that there would be a heavy police checking on the road to Coorg. However, I did not face a single checkpoint. When I entered Coorg village, it felt like a ghost town as there was absolutely no person on the road and I was the only one riding through the empty roads of the town. When I decided to enjoy the hotel and take rest. Today, I will be checking out of the hotel after my breakfast and will do the sightseeing around Coorg if possible and then go back to Chikmanglur. You can have a look at the breakfast, it's pretty nice. There are idlis, sambar, chutney, and this is lemon rice. I had a bite of it and it's pretty good. So in Coorg, as I said, this is the room that I stayed, Tribo Trent's new Redfern Hotel. So let's check how the rooms are. Pretty beautiful, isn't it? Let's have a look. In this cupboard, we have something which is a tea maker. You might not be able to see it right now, but I'll take it out. Here we go. Yep, a tea maker and everything else. There are cups. We got TV, chairs. There's a huge window. Bed looks beautiful. And here it is. Looks pretty well. Raja's seat. Nehru Mantapa. The entrance gate of Madikeri Fort. This is the archaeological museum just inside the premises of Mercury Fort itself. The entry to this archaeological museum is allowed. However, you can't really go inside and visit the fort, which you can see somewhere here. There. The temple that you can see at my back is Anjaneya Temple. We are currently at the gate of Omkareshwar Temple, which you can see there. The entry to this temple is here. And this is closed. So finally I am leaving from Coorg. Last video में मैं आपको hotel room नहीं दिखा पाया था. So hopefully अभी अपने इस video में वो देखा होगा at the start of the video. The name of the hotel is Tribo Redfern. बहुत ही बढ़िया होटल है और बहुत ही बढ़िया रूम्स है. सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और उस हिसाब से उसके रेट बहुत ही कम है. ये होटल दैट इज़ ट्रिबो रेडफर्न जो आपने अभी देखा वो मैंने सिर्फ 1200 रुपये में बुक किया था और 1200 रुपये में बढ़िया होटल मिला, ऐसा मुझे लगता है. तो अब हम बढ़ रहे हैं वापस चिकमंगलुर की तरफ और मैं चिकमंगलुर में उसी होटल में रहने वाला हूँ जहाँ पे मैं पहली बार रहा था, दैट इज़ महाराजा इन, क्योंकि वो होटल मुझे बहुत पसंद आया था. चिकमंगलुर पहुँच के मैं वापस शायद साइट सीइंग के लिए बाहर जाऊँगा. मैं जिस होटल में रहने वाला हूँ वहाँ पे एक 20-21 साल का एक होटल मैनेजर है, उसका नाम है आशिक. तो वो मुझे मुल्ला नगरी और बाबा बुडनगिरी करके जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ लेके जाएगा. मैं मेरे हर वीडियो में ये बात ज़रूर कह रहा हूँ बिकॉज इट्स ट्रू कि यहाँ के रोड्स जो है वो एकदम सही होने की वजह से ट्रैवल का एक बहुत अलग मज़ा आता है. और उसमें अभी बारिश हो चुकी है तो दोनों रोड के दोनों साइड में बहुत बढ़िया सी ग्रीनरी दिखाई दे रही है. अब ये रोड ही देख लीजिए. मैं एक दूर दराज वाले गांव के रास्ते पे चला रहा हूँ और फिर भी यहाँ पे रोड इतनी अच्छी बनी हुई है. अब हम चिकमंगलुर के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं और ये है रेल क्रॉसिंग.
No documents, just he asked me documents. Yes, deal. For pollution and insurance. Pollution है? हाँ ये pollution है. यहाँ पे डेट भी लिखा होगा. जी, thank you. लगता है चिकमंगलूर में भी वीकेंड लॉकडाउन है. यहाँ पे मुझे पुलिस ने रोक लिया है और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए पूछ रहे हैं. हे हाय अगेन गाइस. सो जैसे मैं कह रहा था कि चिकमंगलूर पहुँच के मैं मुल्ला नगरी या बाबा बुडनगिरी जाऊँगा साइट सीइंग के लिए. तो वैसे हम अभी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं. तो चलिए जाके देखते हैं. You won't believe where I am standing right now. It's the road going to Baba Budangiri location. You can see the view at there. It's so amazing. Can't explain this feeling. Look at it. Oh wow. I was about to lose my cap right now, so I am holding it. But look at that, seriously.